Basically, we are a cricket academy which we started in 2014, and we've got three centers right now, and one in Parla and two in Andheri. So we have this annual Premier League which goes on for all the kids from all the academies, all the centers, across all centers. We finished the league matches. Now we're going to be having the quarterfinals today with distinguished guests like Jatin Paranspe, uh, Karsan Gauri, Leslie Tripathi, and Abhishek Gupta coming in. Uh, Nishit Shetty is our partner, and thank you for Kakoli Megani for helping us out with a full flow of the events. And we tend to start the quarterfinals as soon as we finish the functions. We're going to be giving the certificates for participation, and we tend to finish this event by tomorrow. Tomorrow is going to be the semi-finals and the finals, which would be played across all centers, and we'll conclude the games as and when we finish it on Sunday. So how long this academy has been running, and what were the challenges to run the academy as well? We've been running this academy from 2014, and we started with like 2 to 3 kids coming in the academy, and now we are a academy of 140 plus students across all centers. So that's, I think it's a huge So bonus. what's your vision for the academy in the future, Aman? Yeah, the vision is to just make a very, very strong team in the junior circuit. Like we have under 10s also nowadays playing real good class of cricket. So we want to make strong teams as in under 10, under 12s, under 14s and under 16s. And going further, we would like to increase the age group and go on to under 19 as well. But as of now, we are restricted to under 16 age group. And hopefully one day, with our guidance and this, they go on to play for their states and one day maybe for the country also. Support my friend Kakoli. She has been doing my makeup and she insisted that I should come for this event. And when she mentioned children are playing cricket, and this is the future. India is all about cricket, and children are our future. So I was very excited to be part of this league, to see how the children are being groomed and what new talents we are going to see in the next 5 years. Yeah. We don't know, like in next 5 years we'll be seeing the best of like under 19 players, right? Yeah, And yeah. they will be here, maybe they're groomed just from here. So we want to be part of here, we want to encourage our youngsters. Yes, we are proud Mumbai Indians. We love cricket, and I don't want to be divided with the teams supporting CSK or Mumbai Indians, because cricket is our religion. So I love cricket, and I'm very happy when any team does well, and the cricketers really did their best job and they won. Hard work should. Like besides acting, I also do. I was also into sports journalism, so I was having some conversation with some cricketers, and they have been predicting the wins for some teams. But right now, I'm very focused on making sure that what are the lacunas of other teams and how India can work on it and defeat them. Let's focus on India winning the World Cup again. Abhishek, मुझे काकुली जी ने इसके बारे में कुछ दिन पहले बताया और बोला कि एक इवेंट हो रहा है ऐसे। तो मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं इंडिया की सबसे बड़ी एकेडमी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेलता था ताइक्वांडो। तो जब मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स से, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। और मुझे मज़ा आता है जब भी कुछ स्पोर्ट्स का होता है, तो क्योंकि ये फ्यूचर है हिंदुस्तान का। और मुझे हमेशा लगता है कि स्पोर्ट्स नींव है बहुत चीज़ों की, क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें अलग हो जाती हैं स्पोर्ट्स में, मज़हब से हट के चीज़ें होती। तो ये डिसिप्लिन सिखाता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स इसलिए मेरे लिए ख़ुद बहुत करीब रहा है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। तो मैंने जितना भी देखा है आज तक, ये बहुत कमाल का ग्राउंड है। मतलब जहाँ मैंने देखा है कि जहाँ से क्रिकेटर निकले हैं, मतलब मैं इंडिया की बेस्ट एकेडमी से बोल रहा हूँ, तो भी इतना अच्छा ग्राउंड नहीं होता था वहाँ पर। तो उस टाइम से हम देखते आ रहे हैं। तो अब तो बहुत स्पोर्ट्स का क्रेज़ बढ़ा है लोगों में। माँ बाप भी पहले से जागरूक हुए हैं कि चलो हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स कराना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब यहाँ आके देखा तो मैंने कहा सारे माँ बाप खड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ आके अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये
आगे बढ़ने का एक रास्ता है स्पोर्ट्स। I like cricket, you know that I like cricket, I like basketball, I like that tennis, long tennis also. But profession तो obviously सबका एक है, but इसकी अलग भी कुछ मेरा ख्याल से मैं सोचती हूँ उसका अलग टाइम कुछ होना चाहिए। सम टाइम कुछ हम खेले तो हम एन्जॉयमेंट रहता है। एक जो जॉब का जो ट्रस्ट है मतलब बिजनेस का वो निकल जाता है, वो भी एक चीज़ है। और यहाँ भी सबसे मेन जो चीज़ है बच्चे का फ्यूचर की सवाल है। बच्चे यहाँ से ग्रो हो रहा है। And our coach is very good. The both coaches there, they are very good. Thank you. They take care of that each student. I saw that long time. And अभी I don't know यहाँ से बहुत सारे बच्चे आएंगे आगे बढ़ेंगे, कौन अच्छे बैट्समैन होंगे, कोई अच्छे बॉलर्स बनेंगे। सबका फ्यूचर यही से ग्रो अप हो रहा है, तो वाई नॉट हम क्यों चेयर अप नहीं करें बच्चे को। सो आज तो बेसिकली हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमारे टीम सब, मेरा भाई, my friend, there's all family friend. So हमको चाहिए बच्चे और आगे बढ़ें, हमारा ब्लेस रहेंगे उनके साथ, एंड आप लोगों का भी ब्लेस रहेंगे हमारे साथ। दैट्स इट।
Bye.